In waxes, there are esters of fatty acids with higher monohydroxy aliphatic alcohols. So, waxes are similar with that of the fatty acid which are we have seen in the first category of simple lipids, but they are having higher monohydroxy aliphatic alcohols as compared to triglycerides. Though they are waxes are been known because of the term wicks, which is a English word which having the meaning of the material of honeycomb, and because the honeycomb is made up of waxy substance, that's why it is known as beeswax. These are esters of long chain saturated and unsaturated fatty acids with long chain monohydroxy alcohols. The fatty acids range in 14 to 36 carbon atoms, whereas alcohols range from 16 to 36 carbon atoms. Waxes are secreted in vertebrates by cutaneous glands, which produces a coating to keep the skin pliable, lubricated, and waterproof. Hair, wool, and fur, they also are coated with waxy substances. Birds, in particular waterfowls, they also secrete waxes in their preen glands to make their feathers water repellent. Like ducks also, they do have the waxy substance surrounding their feathers so that they can easily swim in the water. The leaves of many plants, for example rhododendron or calotropis, they look shiny because of the deposition of this protecting waxy layer or coating. Waxes also observed to be chief storage form of fuel in planktons. जो वाटर प्लैंकटॉन्स होते हैं उनमें वैक्स चीफ स्टोरेज फॉर्म के रूप में भी पाया जाता है. और बहुत सारे मराइन ऑर्गेनिजम्स लाइक व्हेल, herring, salmon, they consume these planktons in large quantities. These waxes acts as a major food and storage lipid in them. और बहुत सारे मराइन ऑर्गेनिज्म इनको खाते हैं, इन प्लैंक्टॉन्स को, जिसमें वैक्स एज अ स्टोरेज फूड मटेरियल होता है. उसकी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स में भी लिपिड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. ये वैक्सेस बाकी चीज़ों में भी यूज होते हैं. लाइक दे आर यूज्ड एज द बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक, ऑइंटमेंट, पॉलिशेस, लुब्रिकेंट्स एंड कैंडल्स. इनमें भी यूजफुल होते हैं. इनका जो बेस होता है वो वैक्स का बना होता है. तो हमने अभी तक के पहला कैटेगरी देखा, दैट इज सिंपल लिपिड्स, जिसमें फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस, ये तीन चीजें देखी. नेक्स्ट इज सेकेंड कैटेगरी ऑफ लिपिड्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स लिपिड्स. नाउ दिस कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, they are different than that of simple lipid in terms of that along with fatty acid and alcohol, they also consist of some non-lipid substances or groups. These non-lipid substances are what? They are proteins, carbohydrate, phosphate, sulfate or nitrogen. So including these groups, they are termed as complex or compound or heterolipids.
These complex lipids can be classified as phospholipid, glycolipid. Main categories are these two, phospholipids and glycolipids. Then some miscellaneous are also there, like sulfatids and lipoproteins. So we'll see some of the examples of these categories of complex lipids. First, phospholipids or phosphatids. As the name suggests, phospholipids, they must consist of the phosphate group or phosphorus or phosphoric acid groups, isn't it? Phospholipids, they are mostly observed in membranes. हमने अभी पहले देखा था कि जो सेल की मेम्ब्रेन है, जैसे कि एक सेल है, कोई भी एनिमल सेल, उस एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन में ये लिपिड्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. इस तरह के फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में पाए जाते हैं. यहां पर जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, राउंड और स्पेरिकल पार्ट, दिस इज phosphate group, and these two tail parts are nothing but the fatty acids. So these are composed in these cell membranes. This is a polar head and this is the non-polar tail, because phosphate group, it also possesses the charge. That's why it is polar in nature, whereas these hydrocarbons, they don't have any charge. That's why they are non-polar tails. Here we are easily able to understand about the structure of phospholipid. See, these are two chains. So it is a diacyl glycerol. ये कौन सा ग्लिसरॉल है? डायसिल ग्लिसरॉल. इस डायसिल ग्लिसरॉल में दो चेन्स है. एक तो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो एक डबल बॉन्ड है, और एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड की. ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड. तो इनके दो चेन्स में साथ साथ यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप भी लगा हुआ है, यानी कि ग्लिसरॉल मॉइटी और दो फैटी एसिड की चेन. इसको हम बोलेंगे सिंपल लिपिड. लेकिन इन दोनों के साथ साथ अगर एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड हो जाए, लाइक हियर द फॉस्फेट ग्रुप, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड लिपिड. उसको क्या बोला जाएगा? कंपाउंड, या फिर कॉम्प्लेक्स, या फिर हेटेरोलिपिड. तो because it possesses certain charge over it, that's why here you can see there are charges. Phosphate group, most of the time it consists of negative charge, and there is also a nitrogen group. So that's why they are polar heads. So they are known as polar heads. But here these are only hydrocarbon chains. Carbon and hydrogens are present. That's why they are non-polar tails. Here there is a non-polar tails. So this is how the cell membrane of eukaryotic cells is made up of, containing phospholipids, which is a example of, or one of the category of, complex or compound or heterolipid. What are the functions of these phospholipids? First function, which is very important, which is a cell, it is a component of cell membrane. So it gives structural and regulatory functions. These are also present in other electron transport chain, like in mitochondria, phospholipids are there. Absorption of fat में भी ये हेल्पफुल करता है, लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट में, और बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है जो कि फॉस्फोलिपिड हेल्प करता है. सेकेंड कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड is of glycolipids. Glycolipids can also be known as cerebrosides or glycospingosides.
There are different names for the same thing. As the name suggests, cerebrosides, they are the important constituent of brain, where they are about 8% of the solid matter. 8% of the solid matter. They are not only present in brain, but along with brain there are other tissues where they can occur. Because in case with phospholipid, the head part was having phosphate group. Here the term glyco is suggesting about certain groups which is nothing but the one or more sugar units. शुगर यूनिट्स आर देयर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट यूनिट यहां पर अटैच होंगे इंस्टेड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. सो लाइक फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स कंसिस्ट ऑफ अ हाइड्रोफोबिक रीजन which is this particular part, hydrophobic region with two long hydrocarbon tails, and a polar region, this is the polar region which consists of one or more sugar residues. यहां पर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर फिगर में कि एक गैलेक्टोज लगा हुआ है और उस गैलेक्टोज के साथ यहां पर एक फैटी एसिड की चेन भी लगी हुई है और एक स्पिंगोसिन मॉलिक्यूल भी लगा हुआ है. तो एक सेरिब्रोसाइड में तीन चीजें होती है, फैटी एसिड, स्पिंगोसिन जो कि एक अमाइनो अल्कोहल है, अमाइनो अल्कोहल, यहां पर आप नाइट्रोजन देख सकते हो, अमाइनो ग्रुप देख सकते हो, अमाइनो अल्कोहल, एंड अ कार्बोहाइड्रेट विच इज दिस गैलेक्टोज. सो देर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सेरिब्रोसाइड और अ ग्लाइकोलिपिड. Then sulfolipids are also to be considered under the glycolipid because they have a sulfonated glucose residue joined to a diacyl glycerol. यानी कि एक ग्लिसरॉल मोइटी है, ये ग्लिसरॉल मोइटी है, इस ग्लिसरॉल मोइटी को दो फैटी एसिड चेन्स लगे हुए हैं, यानी कि इसको हम बोलेंगे डायसिल ग्लिसरॉल. लेकिन साथ साथ में उसके एक कार्बोहाइड्रेट which is nothing but your galactose or glucose and one sulfur group is attached. That's why they are known as sulfolipids. They are mainly exist in chloroplast also. So this is one of the example under the glycolipid. One more example or category under miscellaneous category under this complex lipid is the lipoprotein, where there are conjugated proteins and compound lipids. Means the lipids attached with the proteins, then it is known as lipoproteins. So most of the time जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पर आप देख सकते हो ये फॉस्फोलिपिड्स है और फॉस्फोलिपिड्स के साथ कुछ प्रोटीन ग्रुप्स भी अटैच्ड है. तो वैसे प्रोटीन और लिपिड्स के फॉर्म को हम लिपोप्रोटीन्स बोलेंगे, जो कि बिकॉज ऑफ द इट्स प्रोटीन आर मेनली दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दैट्स व्हाई दे कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट ट्रांसपोर्ट. यानी कि सेल से बाहर कोई मॉलिक्यूल जा रहा है या फिर सेल के बाहर से कोई अंदर मॉलिक्यूल आ रहा है, कोई आयन आ रहे हैं, उसके लिए ये प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं. तो ये दो फंक्शन हम देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, इस लिपोप्रोटीन का फंक्शन है. एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ दिस लिपिड्स is nothing but the derived lipids. In derived lipids, as we have seen earlier only, these are the compounds which are obtained on the hydrolysis of simple and compound lipids, which possesses the properties of lipids. जो ऐसे components मिले हैं because of the hydrolysis of simple and compound lipids या फिर complex lipids, and उन components में lipids की properties भी शो होती है, तो उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड लिपिड्स, डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स. सम ऑफ द एग्जांपल्स
are like fatty acid, higher alcohols, sterols, steroids, and hydrocarbons. Steroids, as this word steros, which is a Greek word, means solid. It is one of the most studied class of biological compound and often found association with fat. ये that contain no fatty acid, इसमें fatty acids नहीं होते हैं. That's why they are non saponifiable. saponifiable का मतलब होता है कि अगर इन कोई भी कंपोनेंट को अल्कली के साथ हीट किया जाए, so if it yield soap, then they are known as saponifiable components, but they do not have that ability, that's why they are known as non saponifiable. fats जो कि है वो saponifiable होते हैं because they produces soap on treating it with the alkalis. So steroid can be easily separated from the fats by the property of its non-saponification. So they are termed as non-saponifiable residues. So all of the steroids, उनमें उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सैचुरेटेड रिंग सिस्टम पाई जाती है. That saturated ring system is also known as cyclopentanoperhydrophenanthrin, or in short it is also known as styrene. This styrene is here, you can see, which is having 3 cyclohexane rings and 1 cyclopentane ring. So 3 cyclohexane rings are termed as A, B, and C, and at the terminal position there is 1 cyclopentane ring known as D. So based on these 4 rings, the complete structure of steroid takes place. Because it matches with this phenanthrin. Phenanthrin is nothing but a mixture of anthracene and phenol. That's why it is known as phenanthrin. One of the example of this steroid, which is very well known example, is of cholesterol. This cholesterol word also derived from Greek, where chol means bile. Bile salts, we know about our human system, biles are there. Cholesterol is the most publicized lipid in nature because its strong correlation between high levels of cholesterol in the blood and incidence of diseases in the cardiovascular systems in humans. तो कोलेस्टेरॉल इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है, क्योंकि आपको पता है जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस है जिनमें के आर्टरीज में कोलेस्टेरॉल जाकर ब्लॉक्स बनाता है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच वेल नोन वर्ड टू द ह्यूमन सिस्टम. इट इज नॉट द ओनली कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, but it is a precursor of some biologically important steroids like bile acids and various hormones. कोलेस्टेरॉल जो है वो प्रीकर्सर के रूप में भी पाया जाता है बहुत सारे बाइल एसिड्स के लिए और स्टीरॉयड हार्मोन्स में, यानी कि जो हार्मोन्स बनते हैं उसमें ये एज अ प्रीकर्सर करके एक्ट होता है. यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक स्टीरॉयड रिंग है और साथ में हाइड्रोकार्बन चेन है, तो ये कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनता है. कोलेस्ट्रॉल कैन बी डिवाइडेड एज LDL and HDL, that is low density lipoprotein cholesterol and high density lipoprotein cholesterol. इसमें से जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं.
One more category under this derived lipids is of terpenes. Terpenes are again non-saponifiable lipids which are mainly found in plants, and through the word turpentine its name is been given. It consists of many hydrocarbon chains, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन की चेन होती है. The hydrocarbons and their oxygenated derivative are generally lesser than 40 carbon atoms. Simpler terpenes are known as monoterpenes, and it consists of a formula of C10H16. It consists of a isoprene unit. ये एक पूरा का पूरा आइसोप्रीन यूनिट है. इसी के रिपीटेशंस होते हैं किसी भी टर्पीन मॉलिक्यूल में. अगर आइसोप्रीन यूनिट के रिपीटेशंस की वजह से उनका नाम चेंज होता है, लाइक मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, ट्राइटर्पिन या फिर सिस्क्यूटर्पिन. जो हम टर्पंटाइन यूज करते हैं in terms of giving the polish to the wood or the furniture, these are actually these hydrocarbons or the lipids which are the derived lipids. And the last one, which is of carotenoids, which are the tetraterpenes. Carotenoids are tetraterpenes. These are actually the pigments which are mainly distributed in plant and animals also. Mainly they are origin having plant, though they are observed in plant and animal, but उसका origin जो है वो exclusively plant का ही होता है. They are unsaponifiable residues and their isoprene derivatives shows high degree of unsaturation, यानी कि उनमें high degree of double bonds पाए जाते हैं. And because of the high degree of many conjugated double bonds, presence of many conjugated double bonds, they show colors, different colors like red or yellow. For example, जो टोमेटो के अंदर पिगमेंट पाया जाता है लाइकोपिन, या फिर कैरोट के अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं अल्फा एंड बीटा कैरोटीन, वो रेड कलर के होते हैं. ये भी इसी के अंदर आते हैं because of the presence of these double bonds. And carotenoids like xanthophylls, they show yellow color. So today we have seen some of the types of lipids which can be mainly categorized as simple lipids, complex lipids and derived lipids. I hope you people have understood these things. If any queries are there, we will discuss all of these queries in the coming classes in the Google Meet. Thank you very much.